Hello students, today I'm going to teach you clauses. Okay, what is clause? A clause is a group of words with a subject and a predicate. It is usually a part of a sentence. Okay, so what is clause? Clause means there must be a subject and there must be a predicate and that is called a part of a sentence. phrases जब हमने पढ़ा था तब हमने जाना था कि phrases क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और क्लॉज क्या है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर क्लॉज में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है, ठीक है, और फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, द स्काई लुक्स ब्लू इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पे क्या हुआ, sky looks blue has a subject also. The sky is the subject and what is the predicate? Predicate is looks blue. So this is the clause in the sentence. और क्लॉज में क्या होगा, हमेशा एक वर्ब रहेगा. अ क्लॉज मस्ट हैव अ वर्ब इन इट. क्लॉजेस मे और मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस. क्लॉजेस कभी कभी फुल सेंस कंप्लीट सेंस नहीं भी कर सकता है और कर भी सकता है. इट मे बी और मे बी नॉट. ओके, सो this is there is some exercise actually, number 2. I have already done this. Let's explain it. First one is Sheena talks very softly. Here Sheena talks very softly. This is a clause. This is a clause. Why? Because हमको क्या पता है कि clause में subject होता है, predicate होता है, verb भी होता है, और यहाँ पे सब कुछ है. Sheena is the subject, talks verb, very softly is the predicate. So this is clause. Those beautiful sunflowers. सो दोज ब्यूटिफुल सनफ्लावर्स. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक फ्रेज है कि सनफ्लावर्स कैसा है, ब्यूटिफुल है. दोज ब्यूटिफुल सनफ्लावर्स. नंबर सी, क्लास 6 स्टूडेंट्स आर लर्निंग अबाउट द क्लॉज. दिस इज ऑल्सो अ क्लॉज बिकॉज देयर इज अ subject and predicate and also a verb. Learning is the verb, class 6 students is the subject, and about the clause is the predicate. So this is a clause. Shuman dances very well. Shuman is the subject, dances is verb, very well is a clause. Okay, so you have to learn this carefully. Now there are two type of clause. One is main clause, another one is subordinate clause. मतलब which is main clause? A clause that makes complete sense on its own is known as the main clause or independent clause. हमने पहले ही पढ़ा था कि क्लॉज जो है वो एक कंप्लीट सेंस तैयार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. तो जो कंप्लीट सेंस तैयार कर रहा है दैट इज मेन क्लॉज. Okay, for example, Rani walks very hard. Rani walks very hard. So it complete the sense कि रानी बहुत हार्डली काम करती है. It completes the sense, the full sentence also. Okay, there is no doubt to complete the sentence. So this is main clause. And what is independent clause or subordinate clause? A clause that does not make complete sense on its own is known as a dependent or subordinate clause. Dependent or subordinate clause, not independent. Okay, main clause or independent clause and dependent clause or subordinate clause. Okay, now for example, Rani works very hard in order to perform well in the examination. Here Rani works very hard, it completes a sense, but in order to perform well in the examination it is added to the first clause. Okay, we are getting some extra information. We are getting some extra information for these words.
for these group of words. So this is subordinate clause. It depends also on the main clause. ठीक है. So ऐसे होता है मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज कि क्लॉज में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस तैयार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. ठीक है. और इसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और वर्ब भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. There is an example exercise. Okay, I have already done this. You have to underline the main clause and circle the dependent clauses. Number A, you can leave after you finishing writing. So you can leave is the main verb, क्योंकि you can leave ये एक सेंस तैयार करा है कि तुम जा सकते हो. उसके बाद क्यों, किस चीज़ के लिए, आफ्टर योर फिनिश, कब, आफ्टर योर फिनिशिंग राइटिंग, मतलब अपना लिखना ख़त्म करने के बाद तुम जा सकते हो. यू आर एबल टू गो. सो इट इज़ सर्कुलेटेड. नेक्स्ट, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स हु केयर फॉर अस द मोस्ट. सो द मेन क्लॉज इज वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स. हमें अपनी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए. तो ये एक कंप्लीट सेंस भी तैयार कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि हु केयर फॉर अस द मोस्ट, ये एडेड है. ठीक है, फर्स्ट के साथ ये एडेड है. सो इसीलिए ये हो जा रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज. Okay, so students, read this chapter carefully and go through the exercises. Okay, thank you.